डे नाइट न्यूज की प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। पिछले दिनों चंडीगढ़ में कई संगीन वारदातें हुई हैं। कुछ में पुलिस ने कामयाबी हासिल की तो कुछ में नाकामयाब रही। इन वारदातों के बाद से पुलिस की छवि खराब हुई है। पुलिस पर शहर के आम इंसान का विश्वास नहीं रहा है। लेकिन क्या शहर में होने वाले हर जुर्म के लिए पुलिस को जिम्मेदार ठहराना जायज है? जानेंगे आज के प्राइम डिबेट में। अपहरण, हत्या, डकैती ये जुर्म आज तक चंडीगढ़ से कोसों दूर थे, लेकिन अब मुजरिम बिना किसी डर के ऐसे खूंखार अपराधों को अंजाम दे रहे हैं और इसका ठीकरा पुलिस के सर फूट रहा है। चंडीगढ़ एक सुंदर शहर, लेकिन इसकी खूबसूरती को मुजरिमों की नजर लग गई है। इस प्लांट शहर में प्लांट वारदातें अंजाम दी जा रही हैं। पहले 5 साल के खुशप्रीत के अपहरण की बात सामने आई। उसे बचाने की कोशिश की गई, लेकिन सिर्फ उस मासूम की लाश ही मिल पाई। जांच रिपोर्ट कहती है पुलिस मामले में फेल हुई। इस हादसे को कुछ लम्हे भी न बीते थे कि शहर में एक बूढ़ी औरत की हत्या की खबर मिली। शहर में खबर फैलते वक्त ना लगा। पुलिस की बदनामी हुई। बाद में पता चला कि मौत कुदरती थी। फिर जेवरात की एक दुकान में डाका पड़ा। करोड़ों के जेवर लूटे गए। पुलिस पर फिर से उंगलियां उठी, लेकिन मुजरिम ज्यादा देर तक छुपे नहीं रह सके। पकड़े गए, लेकिन पुलिस को वाहवाही नहीं मिली। हम ये किस्से इसलिए नहीं बता रहे कि आपके दिल में खौफ बैठ जाए, ना ही हम पुलिस की नाकामयाबी बयां कर रहे हैं। बस इतना कहना चाहते हैं कि क्या जुर्म के लिए पुलिस को जिम्मेदार ठहराना सही है? सोच ये भी कहती है कि हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की है, लेकिन उस पर हमेशा नाकामयाबी का सेहरा क्यों बांधा जाए? एक बात ये भी है कि फिरौती लेने के बाद खुशप्रीत छूट भी सकता था। शायद तब उन्हीं पुलिस वालों को मेडल मिलते जिन्हें आज सस्पेंड किया गया है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं चंडीगढ़ के एसपी ऑपरेशंस आरएस घुम्मन, चंडीगढ़ के फॉर्मर स्टैंडिंग काउंसिल और एडवोकेट अनुपम गुप्ता, पंजाब के फॉर्मर डीजीपी पीसी डोगरा और गुरदीप कौर जो कि एक सोशल वर्कर हैं चंडीगढ़ में। आपका स्टूडियो में स्वागत है। मिस्टर घुम्मन, जी चंडीगढ़ पुलिस की क्रिटिसिज्म हुई है पिछले कुछ दिनों तो तारे साहब ना किन्नी जस्टिफाइड है क्रिटिसिज्म? संधू साहब, सब तो पहले तो मैं ये गल कहना चाहूँगा भी डेमोक्रेटिक सैटअप का हक है भी किसी भी चीज़ को क्रिटिसाइज कर सकन, क्योंकि सानू तनख्वाह सानू सैटअप लोगों ने टैक्स तो मिलती है और लोग एक्सपैक्ट करते हैं भी एक बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर के तौर पर, सिक्योरिटी के तौर पर एक पीसफुल सिटी हो और चंडीगढ़ जैसा सिटी। लेकिन कई बार क्रिटिसिज्म जोड़ा होंदा है, कई बार असीं सुनिया सुनाइया गल्लां दे उत्ते कर दिंदे हैं, कई बार तत्थों होंदे ने जिहड़े लोकां दे सामने इन्वेस्टिगेशन नूं मद्देनज़र रखते हुए सामने उजागर नहीं किए जा सकते, उन्हां दी इग्नोरेंस करके हुंदा है। और कई दफा क्रिटिसिज्म जायज़ भी हुंदा है। मैं इहदे विच समझदा गा जित्थे तक खुशप्रीत वाली केस की गल है, जिहड़ियां लैप्सिस होईयां उहदी मिनिस्ट्रियल इनकुआयरी की गई और जिहड़े अफसरां दे उत्ते किंतु परंतु होया उन्हां ते इमीडिएट इलैक्शन लिया गया। लेकिन ये मैटर अजे साडे अंडर इन्वेस्टिगेशन एंड इट्स अ बिग चैलेंज फॉर अस, और मैं समझदा भी वी विल बी एबल टू सॉल्व इट। जब तक तनिष्क वाली गल है, आई थिंक इट इज वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टिगेशंस कैरीड आउट बाय चंडीगढ़ पुलिस। पर खुशप्रीत वाले केस दे विच यू विल बी एबल टू सॉल्व इट, बट इट्स टू लेट नाउ। संधू साहब, मैं इन्वेस्टिगेशन करके कई चीजें इत्थे रिवील नहीं कर सकता जी। मैनू भी इस गल का अफसोस है भी उस बच्चे को असीं कोशिश के बावजूद बचा नहीं सके। हालांकि साडा सारिਆਂ ਦਾ टारगेट ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਿਉਂਦਾ वापस आ जाए। तनिष्क केस की गल कर रहे सी। तनिष्क केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ केस ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ खुशप्रीत ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਅਨਸੇਫ ਸਿਟੀ ਹੈ। विदिन 72 आवर्स एडी वड्डी रिकवरी, शायद इन माई पुलिस कैरियर दिस इज द बिगेस्ट रिकवरी। Definitely, very creditable. See, I think we'll just come to that. Mr. Gupta, what do you think? Is the criticism fair? I mean, the Chandigarh police has been facing a lot of flack in the last couple of weeks. To what extent is that justified in your opinion?
Well, they have redeemed their image a bit after the Tanishq robbery. But the Khushpreet case has unraveled the soft underbelly of the Chandigarh police in a very visible and dramatic manner. I have always believed, and as for the former senior in my earlier incarnation at the Standing Council of the UT administration, I spoke about this even in court. The Chandigarh police over the years exhibits the worst syndrome of soft policing, a most unprofessional policing. It is very important that the Chandigarh police and its leaders get into the hard policing mode. But Mr. Gupta, don't you think sometimes we blame the police rather unfairly? You remember the case where an old lady's body was found in her house, and we immediately jumped to conclusions and we felt it's another murder. But finally it came out to be, I think, a case of natural death. Well, that was in the immediate wake of the Khushpreet tragedy. So the public sentiment and the public perception that this again was unnatural, and that was the belief of the police on the spot as well, is understandable. Now the Khushpreet case took almost 2 weeks to unfold. We are not judging the Chandigarh police unfairly. It's not a case of judging them after 24 hours, after 48 hours. They explored all possible options. Now the inquiry shows that in fact every senior officer of the Chandigarh police virtually slept over the case. And I suspect, and that's the worst part of the story, the average low middle class citizen, especially in the rural suburbs of Chandigarh in Bodail village, has ceased to matter for a highly VIP conscious Chandigarh police leadership. So on the outskirts, the people have ceased to matter as far as UT administration and Chandigarh police. That's a very serious charge. Child's parents, no, I level it seriously. Had the child's parents belonged to the northern sectors, the elite sectors, I also come from sector 8. Had they belonged to, it's a cliche, but unfortunately very true. Had he been a bureaucrat's son, had he been a businessman's son, had he been a politician's son, had he been a judge's son, had his parents been anywhere in the northern sectors, the whole attitude of the police would have been far different. Well, it's a very serious charge. I think I'm going to come back to you, Mr. Goman. I'm sure you want to respond to that. But Mr. Dogra, before that, what is your assessment of the Chandigarh police? In one case, I think they faced a lot of flack, and rightly so. In the other case, they solved the case within 72 hours. You stayed in Chandigarh for a long time, and you stay now in one of the middle sectors, neither the northern sector nor the southern sector. They detected the second case, Tanishq case, with electronic gadgets. The same system could have been used for the recovery of Khushpreet, and Khushpreet could have been recovered alive. It was the total insensitivity of the Chandigarh police and the local levels. As I said, their conduct and behavior, the method of investigation and response to the complaint by the parents and other people was totally primitive. And you saying it on the basis of your own experience as a police officer? Police officer. You know, police has to show sensitivity. It was a kidnapping case of kidnapping. Could have been a murder, but the sensitivity of the police should have been apparent. That they were concerned about it, that they want to detect it, they want to go along, taken the parents along with them, and you see the probe, what has come out in the probe, it is very, very disgusting, I must say. So the police lacked sensitivity. Total sensitivity. Mrs. Gurdeep Kaur, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵੀ ਬੜੇ ਜੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਟ ਲੈਕਸ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਸਟ ਡੇ ਤੋਂ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ, ਦੇਖਦੀ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਖੁਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕਿਡਨੈਪ ਹੋ ਗਿਆ। 13 ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨਸਟੈਂਟਲੀ ਟੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਟ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਖੁਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਬਚ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਪੁਲਿਸ ਅਗਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਪੇਨ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਅੱਜ ਚਿਖਾ ਦਿੰਦੀ। Mr. Goman, now a couple of points have come up. Police was insensitive. That's what Mr. Dogra feels. She feels कि जो active ਹੁੰਦੀ police, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਬਚ ਸਕਦਾ ਸੀ। Anupam Gupta of course says that this case exposes the soft underbelly of the city. Sundar Sahab, मैं एक थोड़ा जिहा गुप्ता साहब ਦਾ impression I would like to correct जी। जब तक पुलिस अफसर ਦਾ सवाल है, ਇਹਦੇ 'ਚ नॉर्थ साउथ सैक्टर, ਝੁੱਗੀ ਝੋਪੜੀ
ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਸਰਨ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਪਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਆਲ ਨੋ ਮੈਂ ਪਲੀਜ਼ ਵੀ ਆਲ ਨੋ ਪਲੀਜ਼ ਲਿਸਨ ਟੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਯੂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਨਹੀਂ ਆਮ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਫੁਲੀ ਐਗਰੀ ਜੋ ਮੈਜਿਸਟਰੀਅਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੈਪਸਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜੇ ਲੈਪਸਸ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਫਸਰ ਸਸਪੈਂਡ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇयर ਆਰ ਲੈਪਸਸ ਦੈਟ ਵੀ ਐਗਰੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਈ ਗਈ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕੁਝ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੈ ਜੀ ਆਈ ਫੁਲੀ ਐਗਰੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਜਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏ ਜੀ। ਉਹ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਉਸ ਬੱਚਾ ਜਿਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਆਈ ਕੈਨ ਅਸ਼ੋਰ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰਸ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵਿਦਿਨ 24 ਆਵਰਸ ਆਈ ਗਈ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆ ਗਈ and the child was not murdered within the first 24 hours he was murdered subsequently। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਿਸਟਰੀ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਰੈਂਸਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਮਿਸਟਰੀਜ਼ ਇਨ ਦਿਸ ਕੇਸ ਵੀ ਰੈਂਸਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 4-5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫਰੋਤੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ 34 ਔਰ ਬੜੈਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਸੈਕੰਡ ਡੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ so many hours it took everyone so much time for the SHO for the local police post to register a case to respond to the complaint. It was a small child having been kidnapped and so much time was being taken by the local police to respond. ਮਿਸਟਰ ਕੁਮਾਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ this is a normal thing which has happened that you blame the junior officers and senior officers get away. Don't you think the senior officers morally I think is a very soft word here. I think the senior officers ought to take professional responsibility. ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਆਈ ਗੱਲ ਜੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। I can assure you on that. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ Dr. Sahab, don't get to a break ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ quickly. People don't get convinced with whatever is being. I am a DGP. I live in Chandigarh. I respect Chandigarh police. I know the officers, they're very good officers. But simply suspending SHO is not the solution. Yeah. It's not the first thing is such a heinous crime thing has taken place and what happened? Inspector has been transferred. SHO I have seen. There have been SSPs. Suspension is nothing. महीने बाद फेलो reinstate हो जाता है। One police station goes to another police station. So such a heinous crime and suspension कोई खास punishment नहीं है। Suspension in police is nothing. I must say, is nothing. Because after about 1 month, 2 months, he will be reinstated. He will be posted to some other police station. It's just to hoodwink the public. We have been doing just to hoodwink the public. बड़ा important point आपने है। हम बात कर रहे हैं चंडीगढ़ में बढ़ते अपराध की। Mr. Dogra, before we went to the break, you mentioned that suspension is no punishment. You've been a senior police officer, you've been the DGP of Punjab. Don't you think that is the normal punishment in such cases? I said this is the normal punishment. Initially you will suspend the officer, then the inquiry will be held and whatever departmental action is required will be taken. What I meant was that people forget about it. आप भी तो यही करते थे जब आप